Mubarak for you is my prayer. O Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, tonight we are in Sydney. Let's make a good intention first that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Niyatul mu'mini khairum min amali. Intention of मोमिन is better than action. मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है. So let's start with the good intentions that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, as we heard, the niyatul mu'min khairun min amali. So we'll make an intention that for the sake of Allah Azza wa Jal, we'll sit here, we'll listen all bayan, all ijtima from the start till end, inshallah Azza wa Jal. Also make intention that we'll listen the bayan with the conscious attention, tawajjuh ke saath sunenge, and also make intention that we'll try to refrain ourselves to usage of mobile also, inshallah. So mobile se bachte hue inshallah bayan sunenge. There are so many blessings of Durood-e-Pak, beautiful stories written in the books of virtues of Durood-e-Pak. Today inshallah I will present a very beautiful story which happened in the era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A man hunted a deer, he caught it and was walking within it. As he was passing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah gave the deer the power to speak. And the deer, वो हिरन जो है, रसूल पाक sallallahu alaihi wasallam के सामने से जब गुजर रहा है, शिकारी उसको लेकर जा रहा है. It said, O Messenger of Allah Azza wa Jal, I have a small suckling children. They are hungry. Please tell this hunter to release me. Look at the listening power of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam understanding the voice and the talking of deer also. And Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, Holy Prophet said to that deer, what if you do not return? क्या guarantee है, क्या ज़मानत है कि तुम वापस आओगी? The deer replied, if I do not return, then may the curse of Allah Azza wa Jal be upon me, just like it is upon the person who does not recite durood upon you when you are mentioned. मैं वापस ना आऊं तो वो और ऐसी लानत जैसी उस शख्स पर लानत होती है, या रसूल अल्लाह, जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े. Then, or as it is upon a person who offers salah but does not pray afterwards. आका मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है कि जो नमाज पढ़े और दुआ न मांगे. Then Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam instructed the hunter to release the deer and that he was responsible for it. फरमाया मैं जमानत देता हूं ये वापस आएगी, इसे छोड़ दो. Then the hunter released the deer and after a while it fed its children and then returned. Rasul Pak se promise kiya tha, that's why the deer will return. In the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibreel Amin came and he said, O Messenger of Allah, Allah Azza wa Jal sends his salam and says, I swear by my honor and greatness, I am more merciful upon your followers than this deer is towards his children. या रसूलल्लाह, अल्लाह आप पर सलाम इरशाद फरमाता है मैं आपकी उम्मत पर इससे ज्यादा मेहरबान हूं जितनी ये हिरन जो है अपने बच्चों पर मेहरबान है. And then Allah तबारक व तआला said,
I will return your followers to you the way this deer has returned to you. ऐ महबूब, मैं क़यामत के दिन तुम्हारी उम्मत तुम पर लौटा दूंगा जिस तरह ये हिरन वापस लौट कर आई है. And in Nuzhatul Majalis, some more extra is written in Nuzhatul Majalis. The hunter released the deer and became a Muslim. जब उस शिकारी ने ये सारा माजरा देखा कि ये कमाल है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, what an excellence, that deer talking with him, he understanding, he also give the guarantee, and the deer come on the time, and that see this mu'jiza, that particular hunter become a Muslim. And this beautiful story teach us, we learn with this beautiful story that what is the importance of Durood Pak. Whenever the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in front of us, we must recite Durood Pak. So please, my dear Islamic brothers, don't take it easy that okay, if I don't recite Durood Pak, then nothing will happen. But you learn in this story that Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah ki lanat hoti hai, curse on them whenever they listen the name of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam and they don't recite the Durood. So inshallah, make intention that from now onwards, whenever we listen the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, will recite Durood Pak inshallah. So recite Durood Pak now. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, we'll listen or we'll speak about the very historical event. Even if anybody wants to make a history or want to write a history of Islam without this incident or without this story, it's not possible to write down the history of Islam, because it's very important, and we can say that this is the turning point on the history of Islam, on the seerat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the incident is the conquest of Makkah. I mean the Fath Makkah. So we'll listen about that beautiful story, because so many youngsters with us, and we must know about the history of Islam. When we discuss about the First World War, the Second World War, so many wars in all over the world, and so many historical events about the world. But because we are Muslim, we know about the history of Islam, that what happened in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the main event. Whenever we talk about the Fath Makkah, there are so many stories behind it. Actually, at the time of his migration, when Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam take hijrat from Makkah Pak to Medina Munawwara, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam bade farewell to his beloved motherland at night in a state of utmost distress, along with his loyal and faithful friend Sayyiduna Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. He sallallahu alaihi wasallam glanced on the Holy Kaaba and saying the following words before setting off for Medina: O Makkah, I swear by Allah Azza wa Jal, in my sight, you are the dearest to me. Out of all cities of the world, if my tribe had not exalted me, I would have never left you. ऐ मक्का, तू मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है. अगर यहाँ के लोग मुझे ना निकालते, तो मैं तुझे छोड़ कर ना जाता. बड़े गम में, बड़े दुख में, sadness में, he left the place of his birth, the city where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent 53 years of his life. Try to understand the importance of Makkah Mukarrama. प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया इस दुनिया को 63 years. 63 years life span है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में. फिर हयात तैयबा यकीनन जारी है, मगर जो ज़ाहिरी apparent life है for 63 years, and out of those 63 years, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent 53 years in Makkah Mukarrama. And now it's a time to migrate. And nobody knows that at that time, it's not beyond imagination that the one who is departing farewell in such a condition of dejection will return back to the city of Makkah after only 8 years with dignity and rank of a great conqueror, with utmost honor, and will enter the holy home of Allah Azza wa Jal, elevating with the elegance and eminence of his prostration. कोई नहीं सोच सकता था कि इस हाल में मक्के को छोड़ने वाले 8 साल में शान और शौकत के साथ फिर मक्के में तशरीफ लाएंगे. सुभान अल्लाह. My dear Islamic brothers, 10th of Ramadan, 8th Hijri, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam mobilized
the blessed army of 10,000 and moved towards Makkah. While departing Medina Munawwara, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and all the blessed companions were in the state of fast. Sabke roze the. But when he sallallahu alaihi wasallam reached the place called Qudayd, he asked for water and openly drank in sitting on his horse, while showing this to entire army. Sabko bataya कि आज रोजा तोड़ दिया जाए, रोजा break कर दिया जाए, because we are in the travel and we are going towards the war. So सारे सहाबा इकराम ने पानी पिया and they broke the fast. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam then entered in Makkah Mukarramah. The first thing that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did was the following announcement. In all over the world, there is no example like that the city conquered without having a sword, without any blood. बगैर किसी तलवार उठाए, बगैर किसी लड़ाई के पूरा शहर फतह हो गया. Because रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौज लेकर मक्का पाक में दाखिल हुए, सबके दिलों पर हैबत तारी हो गई. Everybody trembled. And what a beautiful announcement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave on that day. He announced that the one who surrendered his weapon, he will be kept secured. The one who shut down his door will be kept secured. The one who enters Kaaba will be kept secured. जो काबे में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो अपने हथियार नीचे रख दे उसके लिए अमान है. अरे जो घर में दाखिल हो जाए, enter his house और shut the door, दरवाजा बंद कर ले, उसके लिए भी अमान है. Then on this occasion, Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu suggested, O Prophet of Allah Azza wa Jal, actually Abu Sufyan is proud for his chief. वो being a chief जो है वो proud feel करता है, सरदार है वो अपने कबीले का. Please allow some distinctive privilege to him. कुछ इसके लिए भी ऐसा ऐलान कर दें कि ये भी अपनी इज्जत बचा ले. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on response on that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated that the one who enters the home of Abu Sufyan will also be kept secured. Abu Sufyan के घर में कोई दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है. यानी basically what is the theme behind that? Try to understand that some people are saying that Islam is propagated, or Islam is go from all over the world with the sword. Islam is not propagated with the sword. Islam तलवार के जोर पर नहीं फैला. Islam, alhamdulillah, we find Islam in all over the world. And because of the peace, because of the love, because of the forgiveness, माफी करके, मोहब्बतों के जरिए, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने Islam को फैलाया. Then, when the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Makkah as a conqueror, he sallallahu alaihi wasallam was riding upon his she camel Kaswa, and he sallallahu alaihi wasallam was wearing a black colored imama mubarak. And then he sallallahu alaihi wasallam proceeded to Baitullah Sharif, riding on his she camel and making Sayyidina Usama bin Zaid radiyallahu ta'ala sit behind him, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala, and the key holder of the Kaaba, Sayyidina Usman bin Talha Hajabi radiyallahu ta'ala. At that time, 360 idols were present in the row inside the Kaaba. Kaaba ke andar 360 but maujud the. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stood up himself and started demolishing the idols with the edge of the stick he sallallahu alaihi wasallam was holding whilst reciting the verse of the Quran, Jal haqq wa zahaq al batil. The translation, the truth has reached and the falsehood has vanished. Indeed, falsehood is out to vanish. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत मदनी फूल सीखने को मिल रहा है कि काबे में 360 बुत थे. इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज काबे में हो, जो चीज वहां पर हो और वो हर वक्त ठीक हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ही ऐसी है कि 360 idols in that time on the Kaaba, जो कुफारे मक्का थे, they are used to make तवाफ naked, नंगे होकर तवाफ करते थे. तो क्या वो ठीक थे? क्या अल्लाह उन्हें रोक नहीं सकता था? तो अगर काबे में कुछ होता है, हरमैन तय्यबैन में कुछ होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि जनाब if there is happening in Makkah Mukarramah, in Madinah Munawwara, always good, तो what's happening before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? तो ये अंडरस्टैंड करने वालों के लिए बात है. Then all those idols that were placed inside the Kaaba, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered for them to be removed. When the Kaaba was eventually purified from all the idols,
then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went inside the Kaaba, and Sayyiduna Usama bin Zayd, Sayyiduna Bilal, and Sayyiduna Usama bin Talha radiyallahu ta'ala anhum and recited takbir in all corners and also offered 2 rakat of salah. Try to imagine कितना खूबसूरत ये सीन होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ काबे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, काबे में दाखिल होकर तकबीर दे रहे हैं। वो काबा, वो मक्का जिससे बड़े सैडनेस के साथ आप मदीना मुनव्वरा गए थे, मगर नाउ दे रिटर्न विद द पर्टिकुलर डिग्निटी। अब क्या होता है? देन व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम आउट ऑफ द काबा, he sallallahu alaihi wasallam called Usama bin Talha radiyallahu ta'ala anhu and handed over the key of the Kaaba to him and said, now take this key and it will remain with you forever. Only he who is an oppressor will snatch this key from you. जो वो जालिम होगा जो तुमसे ये चाबी लेगा, वरना क़यामत तक तुम्हारे साथ और तुम्हारी आल के साथ ये काबे की चाबी रहेगी। Then after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam conducted the first general congregation in the home of Allah Azza wa Jal, which not only contained a great number of Muslim soldiers, but many prominent figures of infidels and pagans also attended it. सरदारान कुरैश भी थे, कुफ्फार भी थे, और अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाया तारीख में गोल्डन वर्ड्स के अंदर, that beautiful sermon, that beautiful congregation will return. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया that, O people of Makkah, do you know how I am going to treat you today? You know, oppressors, बड़े बड़े जालिम सामने खड़े थे. What they say, listening to this alarming and fearful question, all the unbelievers became confounded and began to tremble with fear. But after observing the prophetic gesture of the merciful Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what they said? They collectively said, Akhun Kareem wa ibnu Akhin Kareem. Meaning you are a kind brother and the son of a kind father. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, replied his compassionate manner, La tasriba alaykumul yawm, fadhabu antumut tulaqa. There is no charge unto you all. Go, you are all free. Give them maafi, give them forgiveness. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान फरमा दिया, और उसमें कैसे कैसे ऑपरेशर थे, कैसे कैसे जालिम थे, जिन्होंने कितने मजालिम ढाए थे. But after that muafi, after that announcement, after that forgiveness, what happened? Subhanallah, such an unexpected and sudden merciful reply caused the eyes of the criminals to well up tears. The slogans of La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah released the tongues of infidels that protected a spiritual cover all around the Kaaba. Such an amazing revolution took place in the hearts of the unbelievers that the whole environment are changed. बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े कुरैश के वो लोग जो दुश्मन मुस्तफा थे, इस माफी के ऐलान से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए. What we learned that अगर if we want to make a revenge, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on that time, if we take a revenge, उन लोगों को मर्डर करने का, उन लोगों को किल करने का ऑर्डर दे देते, तो वो लोग तो चले जाते, बट उनके बच्चे, उनकी आल, उनके आने वाली नस्लें, वो दुश्मन खुदा, दुश्मन मुस्तफा रहते, वो भी रिवेंज की आग में जलते. मगर ऑन दैट मुआफी, ऑन दैट फॉरगिवनेस, अब वो लोग मुसलमान हुए, उनकी आने वाली फैमिलीज, उनकी नस्लें, उनके खानदान, उनके कबीले, वो सारे के सारे मुसलमान हो गए. तो लर्न करने को ये मिला, चाहे कितना बड़ा कोई जुल्म क्यों ना करे, कितना बड़ा हमारा हार्ट ब्रोक क्यों ना करे, मगर अगर हम अल्लाह की रिजा के लिए उसे माफ कर दें, हम उसे फॉरगिव कर दें, तो वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है. वो जो दुश्मनी है, वो जो रिवेंज की आग है, द फायर ऑफ रिवेंज जो है, वो लव में तब्दील हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है. हमें ये बात लर्न करनी है मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों. दैट इवेंट, और एक्चुअली अल्लाह तबारक व तआला ऑलरेडी गैब की खबर देते हुए, द नॉलेज ऑफ अनसीन देते हुए, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि फतह मक्का को नसीब होना है. सुभान अल्लाह, द प्रेडिक्शन एंड ग्लैड टाइडिंग ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का are mentioned in few verses of the Holy Quran. In Surah Al-Nasr, Allah Azza wa Jal says, beautiful translation, when the help and victory of Allah come, and you see people entering the religion of Allah in multitudes, afwaja, fauj dar fauj dakhil honge. Farmaya, then proclaim the purity of your Rabb while praising Him and seek forgiveness from Him.
Indeed, he is the most acceptor of repentance. सुभान अल्लाह, ये आयत जो है गोया इत्तला दे रही है कि फतह मक्का होगी, तुम्हें एक फतह नसीब होगी, और ऐसी फतह नसीब होगी अफवाजा, मल्टीपल तादाद में फौजों की फौजें मुसलमान होंगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दोज, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनाउंस फॉरगिवनेस. वो कौन लोग थे? उनके कोई छोटे गुनाह नहीं थे. कौन कौन थे उसमें? दोज पीपल, इफ वी कंसीडर द इशू डीपली, वी विल फाइंड दैट देयर वर सो मेनी टायरेंट्स of the Quraysh present. There was who had frequently pelted stones at the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Among them were also those ferocious tyrants who had attempted to martyr the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam many times. And those merciless oppressors were also present there who had martyred the blessed teeth and smeared the enlightened face of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam with his holy blood. चेहरे को लहू लुहान करने वाले, कातिलाना हमले करने वाले, पत्थर बरसाने वाले, रास्ते में कांटे बिछाने वाले, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिलवड अंकल सैयदुल शुहदा सैयदुल हम्जा रदियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा आकर मार्टर्ड करने वाले, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को मार्टर्ड करने वाले, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत खब्बाब रदियल्लाहु तआला अन्हु, एंड सो मेनी सहाबास पर इतना ऑप्रेस, इतना जुल्म करने वाले कि तपते सहरा में, हॉट वेदर ऑफ मक्का, और उसके अंदर जब सहरा हो, डेजर्ट के ऊपर अगर किसी को लिटा दिया जाए 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर, और दोज आर द ऑपरेसर्स, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव forgiveness for all. That this is the lesson for us, that sometime somebody disheart us, they misbehave with us, but we are not ready to forgive him. My dear Islamic brothers, this is Islam. This is the knowledge of Islam. This is the taaleem of Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teach us that how we spend our life, how we do the work in all over the world. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the companion. Look at, it is not the first time in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's happened many times. ये एक वाकया नहीं है. If you try to learn the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the history of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's happened many times. The companion Hazrat Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu has narrated, once I was walking alongside the beneficent and the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam, while he was wearing a Najrani shawl, very beautiful shawl, with thick, rough edges. Suddenly a Bedouin, a gaon ka baddu, villager, got hold of the shawl and pulled it with such a violent jerk, झटके के साथ उसने चादर को खींचा, that it left a bruise on the blessed neck of the Sultan of the world, the beloved of Rabb sallallahu ta'ala alaihi wasallam. प्यारे आका के कांधे मुबारक पर, नेक पर, गर्दन पर निशान पड़ गए. इतनी जर्क के साथ, झटके के साथ उस बिडौइन ने, उस बद्दू ने खींचा. Then the beloved of Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, watch him with the smile. स्माइल के साथ मेरे आका ने उसे देखा. And what he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, order that I be given a share from the wealth that Allah azza wa jalla has given under your custody. कि आप मुझे भी अल्लाह की तरफ से जो आपको मिला उसमें से हिस्सा दीजिए, ऑर्डर कीजिए. Look at the way to talk. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turned his attention towards him and smiled and ordered that he given some wealth. इनको भी कुछ हिस्सा दे दो. अपने सहाबा से कहा इन्हें भी कुछ माले गनीमत से दे दो. Nothing harsh. कोई डांटा नहीं, कोई झड़का नहीं. आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है. Look at the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if we have some wealth or some status and anybody displease us, somebody, not talking with us with the manner, how we replied with them. हम किस तरह उनसे बात करते हैं जब हमारे साथ कोई harsh word का इस्तेमाल करता है. यही तो वक्त है सब्र करने का. This is the time of patience. यही वो वक्त है अपनी प्यारी हुस्न अखलाक की अदा को अदा करने का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबिट को फॉलो करने का. यही तो टाइम है. My dear Islamic brothers, once another time that in Seerat Mustafa sallallahu alaihi wasallam, very beautiful kitab which is published by Dawat Islami, also you can find from the Maktabatul Madina, or you can download it from our website dawatislami.net. In that book, once during journey, the eminent and respected Prophet sallallahu alaihi wasallam was asleep. And meanwhile, Gharas bin Haris, he was that time, he was not a believer, actually वो काफिर था, और seized his sword and took it out of the sheath. मयान से तलवार निकाली,
and with intent to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. प्यारे आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, nobody around him, no guards at all, and only the Gharas is there and have a sword in his hand. And what happened next? When the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam woke up, he saw the Gharas on his near him and have a sword in his hand. Then the Gharas said, "Who will save you from me?" With the proud, takabbur ke saath, ab aapko mujhse kaun bachayega? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, only one word, nothing else. Sirf ek lafz farmaya, Allah. Just. But you know who said that word? Rasulullah, Mahboob Khuda. When he said Allah, the sword in the hand of Gharas, uske haath se wo talwar hi gir gayi. And he trembled. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki jab wo awaaz suni, the sword dropped from his hand. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam seized the sword and asked to him now, "O Gharas, now who will save you from me?" Ab tumhe mujhse kaun bachayega? Allah. Ghaur kijiye. He is here to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have chance to make revenge. But after asking him, now who will save you, O Gharas? Then Gharas said, look who said, pleadingly, implored, request, मुझे माफ कर दें. Please give me one more chance for my life. मुझे माफ कर दें, आप बड़े करीम हैं, आप बड़े मेहरबान हैं. Allah, Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam let him go and forgave him. प्यारे आका ने उसे माफ फरमा दिया. जब गौरस अपनी कौम में गया, when the Gharas returned to his tribe, he told them that he had returned from a person who is the best person amongst whole of mankind. मैंने ऐसा शख्स जिंदगी में नहीं देखा, मैं ऐसी शख्सियत से मिलकर आया हूं जो सारी दुनिया में ऐसा कोई और नहीं है. मेरे आका उसे कत्ल फरमा देते, क्या वो ये जवाब देता? क्या वो ये आंसर देता? अरे माफ करके दिलों को जीतना सीखो, फॉरगिव करके दिलों में एंटर होना सीखो. अगर नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं तो आप फॉरगिवनेस की आदत बनाएं, सॉफ्ट हो जाएं, अपने दिल को बड़ा कीजिए, बिग हार्ट कीजिए और मुसलमानों के साथ रहना सीखिए. किस किस वाकये की निशानदेही करूं, कौन कौन सी स्टोरी इन द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डिस्क्राइब करूं. सुभान अल्लाह. ड्यूरिंग गज़वा उहद, one of the blessed tooth of the Sultan of Medina sallallahu alaihi wasallam was martyred, broken, and his face was also wounded. But the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said nothing to them except, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah Azza wa Jal, guide my people for they are unaware of me. ऐ अल्लाह, ये मुझे जानते नहीं है, इन्हें मुआफ फरमा दे, इन्हें हिदायत अता फरमा. प्यारे आका की जबान पर यह जारी था. Once Labid bin Asam casted a magical spell on the respected and revered Prophet, but the mercy of universe sallallahu alaihi wasallam did not take any revenge from him. Further, he also pardoned the Jew who had poisoned him. प्यारे आका ने अपने आप को जहर देने वाले को, अपने ऊपर पर जादू करने वालों को पता भी चल गया किसने किया था, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फॉरगिव कर दिया. आज हमें पता कुछ नहीं होता, हमें शक होता है इसने कुछ करवाया है और हम उसी से रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं. हालांकि बाज़ औक़ात ये गलत होता है, हमें पता भी नहीं होता किसी ने कंफर्म हमारे खिलाफ कुछ किया है. But we are ready to revenge, but we are ready to fight always. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows that who gave him poison, who make up, magic on him. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pardon him, forgive for them. My dear Islamic brothers, this is the teaching of Islam. This is the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The mother of the believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, said that her noble husband, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam के बारे में क्या फरमाती है? The one bestowed with the Mi'raj, the most beloved of Allah Azza wa Jal, would neither utter foul language out of habit, nor would he do it as a formality. Neither was the amongst the people who holler in the marketplace, nor would he return an evil act with evil. He would rather forgive and tolerate. कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, कभी किसी पर बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए. देखिए घर की खातून, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो मुबारक ज़ौजा हैं, बीबी आयशा हमारी मदर हैं, वो फरमा रही हैं, घर के अंदर से बात आ रही है कि हमेशा नरम, माफ करने वाले, बुराई का बदला भी अच्छाई से देने वाले. सुभान अल्लाह. That is the attitude of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A person came into the court of Holy Prophet once
and said, "O Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, how often should we forgive our servants?" May there are so many brothers have servants, हमारे पास एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि एक दिन में अपने गुलाम को कितनी बार माफ करना चाहिए, इतनी गलतियां करते होंगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remained silent. He iterated again. He repeated the question again. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, how often should we forgive our servants? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied 70 times. 70 बार माफ करना पड़े, 70 बार माफ कर दो। ये है इस्लाम की तालीमात। और उलमा इसकी इंटरप्रिटेशन में बयान करते हैं कि 70 times actually Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the number of 70 times in Arabic language it implies for the several times, यानी जितनी बार हो सके ज्यादा से ज्यादा माफी करो। That is the meaning of that hadith pak. Subhanallah azza wa jal. My dear Islamic brothers and viewers of Madinah, we all are here and we all need forgiveness from Allah azza wa jal. We all need palace in heaven. Everybody needs it. हम सब चाहते हैं कि जन्नत में घर मिल जाए। हम सब की ख्वाहिश है कि हमारा जो हिसाब है, अकाउंटेबिलिटी है ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वो आसानी के साथ, इजीनेस के साथ हो जाए। एवरीबडी ऑफ नीड इज, प्लीज लिसन केयरफुली। कंपेनियन हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु narrated, the Prophet of Allah Azza wa Jal said, whoever has 3 things, Allah Azza wa Jal will take his account with ease and will enter him in paradise. Then I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what are those things? Listen carefully, but make intention now before listening this. सुनने से पहले नियत कर लो कि इंशाअल्लाह will try to practice those 3 things in our life inshallah. Because 3 ही तो चीजें हैं, only 3 things. If we practice in our life, what is the inam, what is the reward? That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that whoever has 3 things, Allah Azza wa Jal will take his account with ease and will enter him in paradise. अरे यही तो हमें चाहिए कि हमारा हिसाब किताब ना हो, हमसे पूछा ना जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। Only the 3 things. Number 1, mend relations with those who try to break off ties with you. उनसे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे कता ताल्लुक करते हैं। What we are practicing today, no, we are not going towards them because they are not inviting us. Because they are not inviting us, that's why we are not inviting them. We are not going towards them. They don't give us gift, that's why we don't give them gift. ये हमने आदत बना ली, हमने रिश्तेदारियां तोड़ दी for small reasons. From now onwards, make intention that inshallah will tie our all relatives with us inshallah azza wa jalla. हम मोहब्बतों को और बढ़ाएंगे, जो रिश्तेदारी तोड़ने वाले हैं हम उनसे जोड़ेंगे। Number 2, endow those who deprive you. फरमाया जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। Number 2, जो महरूम करे उसे तुम अता करो। हम सम टाइम किसी को गिफ्ट इसलिए नहीं देते, वो हमें गिफ्ट नहीं देता, हमें अपनी दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाते, वो महरूम कर रहा है। हमें तो जन्नत चाहिए ना। We need paradise, we need forgiveness from Allah Azza wa Jal, so always give them. और जो महरूम करे तुम उसे अता करो। Third thing, forgive those who are unjust towards you. जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। तो always be humble, always be down to earth, always be polite, tolerant और माफ करने वाले बनिए, forgive करने वाले बनिए। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, what a beautiful answer. Once Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu states, I request Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tell me a deed that will take me to heaven. Beautiful question. Everybody needs the answer for that question. कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don't give very long list that those 20 words do it and then you go enter the heaven. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam answered in one word, in one sentence. What he say? Avoid getting angry and heaven is for you. गुस्सा करना छोड़ दो, जन्नत तुम्हारे लिए है। Look at the easy way to enter in heaven. And we are ready to revenge. We are ready to fight. We are ready to, make a punishment to everybody. Try to give forgiveness. Try to be polite. माफी के दरगुजर की जिंदगी गुजारो और जन्नत हासिल कर लो। Subhanallah, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, look at the habits of our ancestors. ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना। Now listen, few stories of our ancestors, our aslaf, our बुजुर्गान दीन, our सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान। Subhanallah. In कीमिया सादत, हुज्जतुल इस्लाम, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली states a person talked in a bad way
to Amirul Mu'mineen, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu. He's a leader of Muslim Ummah on that time. How he replied? He bowed his head and said, do you want me to be angry so that shaitan will entangle me in arrogance of my power and my exercise injustice on you? And on the day of judgment, you will seek recompense for it from me? It just won't happen. He radiyallahu ta'ala said that and remained silent. मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा, अभी गुस्सा कर लूंगा, कयामत के दिन तुम फिर बदला लोगे मुझसे. अपने आप को उन्होंने काबू किया. सुभान अल्लाह. Once a person swore at Sayyidina Salman Farsi radiyallahu ta'ala. गाली दी. Look at the status of Sahabi Rasul, Sayyidina Salman Farsi radiyallahu ta'ala. He replied, if on the day of judgment, look at the reply. Look at the treat. How he replied. He replied, if on the day of judgment, my scale of sinful deeds is heavier than that of my good deeds, then I am worse than what you have called me. अगर मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी है, नेकियां थोड़ी हैं, जो तुमने कहा है, मैं तो उससे भी ज्यादा बुरा. And if it is lighter, गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा हैं, then I do not care what you just called me. मुझे फिर तुम्हारे कहने की परवाही कोई नहीं. Not replied. हम तो एक गाली दे, will try to give them 7 गालियां, और 7 बार उसको बुरा भला कहेंगे, उसकी नस्लों को खराब कर देंगे. What is our, attitude right now? Look at the state of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. He is a person, he is a sahabi, afdalul bashr ba'dal anbiya. तमाम अंबिया के बाद जो अफजल तरीन हस्ती हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं. द फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह, यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं. मगर उनका एटीट्यूड क्या था? स्टेटस जरा जहन में रहे, देन ट्राई टू रियलाइज हाउ हिज एटीट्यूड इन हिज लाइफ. दैट अ पर्सन वाज ओपनली एंड ब्लेटेंटली स्पीकिंग बैडली अबाउट सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, एंड ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग in retaliation. He rahmatullahi ta'ala was asked why he was not saying anything. He radiyallahu ta'ala replied, I am not aware of any of his bad habits. To speak ill of him, why should I indulge in a major sin by slandering him? मुझे इसकी कोई बुराई पता ही नहीं है, तो मैं कैसे इसके बारे में बुरा बोलूं, और बुरा कह के गुनाह कबीरा में इख्तियार कर लूं. Look at these are the ways. ये अंदाज होता था जब कोई बुरा बिहेव करता था. बट प्लीज हमें भी अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को ठीक करना होगा. अपने बच्चों की अम्मी से लड़ने वालों, अपने चिल्ड्रन पर जुल्म करने वालों, अपने फैमिली पर सख्तियां करने वालों, गौर से सुनो. इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता. आपकी बच्चों की अम्मी भी इंसान है. शी इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग. ऑलवेज ट्रीट विद हिम पोलाइटली. अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं. आपसे नहीं होगी मिस्टेक, कि हमसे मिस्टेक्स नहीं होती? व्हाई वी आर रेडी टू फाइट एवरी टाइम? Why we are want to revenge every time? Try to forgive the mistakes of the people. और इस उम्मीद के साथ हदीस पाक का खुलासा है, जो माफ नहीं करता वो माफ नहीं किया जाता, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता. Companion of Sayyidina Jarir radiyallahu ta'ala narrated that the most eminent Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, whoever is not merciful to others will not receive mercy. Whoever does not forgive will not be forgiven. उसे माफ नहीं किया जाएगा. अगर मुझे माफ ना किया गया, हम कहां जाएंगे? माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, रिवेंज खत्म कीजिए. इट्स नॉट अ टीचिंग ऑफ इस्लाम. अगर कोई हमारे साथ बुरा कर दे, कोई बात नहीं, हमें जन्नत में जाना है, हमें अल्लाह को राजी करना है. माफ करके अल्लाह से रिक्वेस्ट करो, ओ अल्लाह अज़्ज़ व जल, आई फॉरगिव हिम फॉर योर सेक. या अल्लाह प्लीज फॉरगिव माय सिंस. अपने रब से मांगो ना, फिर देखो वो रब्बे करीम कैसी अताएं फरमाता है. वो मुआफ फरमाने वाला है, वो अरहमुर राहिमीन है. अ ब्यूटीफुल दुआ विल रिसाइटेड ऑन द शब कदर. ब्यूटीफुल दुआ. प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन. ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है. यू आर अ बिग फॉरगिवर. तुहिब्बुल अफ़्वा, यू लव फॉरगिव. फ़अफ़ु अन्नी. ए अल्लाह, मुझे भी माफ कर. प्लीज फॉरगिव माय सिंस. या गफूर, ए माफ करने वाले, ए मगफिरत देने वाले. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. टुडे दैट बयान, if think about, look at the way, अगर इसके बारे में सोचना शुरू करें, if you think all about this, that every Muslim have a heart like this, to forgive everybody, to be humble with the brothers, what a beautiful family, what a beautiful environment will create in all over the world.
And that is the teaching of Islam. Please, Musliman aisa hona chahiye कि दूर से देखकर, from far, everybody understand, yes, this is the true Muslim. With the smiley face, with the humble attitude, always forgive, not anger, not fighter. Why we want to introduce ourselves as a revenger, as a fighter, as a harsh man. Be polite. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always smile. Subhanallah. If you make a smile on your face, make an intention. This is sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So every time you smile, inshallah you take a reward from Allah azza wa jalla. हर बार सुन्नत का सवाब मिलेगा जब आप मुस्कुराते रहेंगे. So Alhamdulillah, this is the teaching of Dawat Islami also. Alhamdulillah, we belong to Dawat Islami, which is a worldwide organization of Quran and Sunnah. Alhamdulillah, Dawat Islami started about 34 years ago from the small area of Karachi, Pakistan. And now, Alhamdulillah, in such a 34 years, Alhamdulillah, the message of Dawat Islami is spread all around the world. We already worked in 97 departments, and our message is spread in about 200 countries of the world. And so my message to all of you to come and join Dawat Islami. This is the message of love, message of peace, message of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aim of Dawat Islami is the Madani aim. I must rectify myself and the people of the whole world. This is the aim which is given by our Sheikh-e-Tariqat, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri. He is from Pakistan. He is our Sheikh. He started that organization, and because of his barakah, because of his blessing, now millions and millions followers, alhamdulillah, in all around the world. So we need to spread this message in Australia. Please be with us. Be punctual in every week Ijtima of Dawat Islami in Auburn, Faizan Medina. We have center there right after Maghrib. So Alhamdulillah, Dawat Islami is working in all over the world. So I hope you will become punctual in our Ijtima, inshallah Azza wa Jal, to learn these beautiful pearls. May Allah Azza wa Jal give us the strength to forgive our brothers. Allah Tabarak wa Ta'ala give us that attitude which please Allah Tabarak wa Ta'ala. Ameen. Bijahin Nabi Ameen. Sallallahu Ta'ala alayhi. For you.